Assalamu alaikum. I'm Shazia Kamran. I'm an A-level teacher working with the city school system from last almost 15 years. And I worked in different institutions and I've observed that students who are coming in the education institutions, whether those are private institutions or government institutions, they're all bringing with them a lot of stress, either from the families or in the surroundings in which they are living. So this was always a challenge for the educational institutions कि वो उन बच्चों को एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी एकेडमिक प्रोग्रेस उनकी हिंडर ना हो. अब जब कोविड-19 आया तो आई वॉज बीइंग एजुकेशनिस्ट, आई वॉज रियली कंसर्न एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द एजुकेशनिस्ट आर कंसर्न कि जो बच्चे, अब हमने देखा कि बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज़ कर गया कोविड के दौरान. आपके बच्चे जो हैं वो कन्फाइनमेंट की वजह से फ्रस्ट्रेटेड वैसे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. सोशल इंटरेक्शन उनका नहीं हो रहा. कुछ बच्चों ने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया है. तो वो बच्चे अब डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स, डिफरेंट बैकग्राउंड से जो आएंगे, प्रॉब्लम्स भी उतने ही डिफरेंट होंगे. और इसलिए बीइंग एजुकेशनिस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उन बच्चों को जब स्कूल आएंगे, एक तो हमने उनकी ये चीज़ ज़रूर जहन में रखनी है कि हम उनको कुछ ओवरडोज ना करने की कोशिश करें, उनको ओवरबर्डनाइज करने की कोशिश ना करें. हमने उन लोगों को स्लोली एंड ग्रेजुअली along with the problems they are facing, we have to carry them along so that their academic progress should take place. For example, अभी देखें, सबसे पहले हमने, अब एक बच्चा स्कूल में आया है, हम उसको देखेंगे कि उस बच्चे से इंटरेक्ट करने से अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बच्चा जो है वो किस तरह के इमोशनल स्टेट के अंदर है और उस इमोशनल स्टेट को हमने किस तरह हैंडल करना है. देन वी हैव टू इंटरवीन एंड वी हैव टू प्रोवाइड हेल्प टू द चाइल्ड सो दैट ही कैन अचीव दैट कंफर्ट जोन इन विच हिज academic progress can take place. This is not, I can understand, हम सब लोग थोड़े से पेरेंट भी स्ट्रेस्ड आउट हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अपने जो वो स्ट्रेस्ड आउट हैं कि स्कूल्स इतने अरसे से क्लोज हो गए हैं और बच्चों ने इतना कुछ मिस कर दिया है. लेकिन हमें ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बच्चे जो हैं उनको आप एक ख़ास लिमिट से, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी लेवल से ऊपर मत लेके जाइए. उन बच्चों को स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैव टू ब्रिंग देम बैक ऑन द सेम लेवल इन विच दे वर, और एंड हाउ टू मेक देम मूव अहेड. इसमें पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स भी ओवर इंथुजियास्टिक ना हो और उनको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बच्चा, अब देखें, इंटरपर्सनल स्किल्स में बच्चे वीक हो गए होंगे क्योंकि वो सोशल इंटरेक्शन उनका अपने पीयर ग्रुप में नहीं हुआ. तो उसको बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स और टीचर्स और मैनेजमेंट मिलकर इस चीज़ को बेहतर करें ताकि बच्चे जो हैं वो किसी भी तरीके से इमोशनल जो स्ट्रेसेस से अपने साथ लेकर आ रहे हैं उनको ओवरकम कर सकें. अगर हमने इमोशनल स्ट्रेसेस को प्रॉपरली इंस्टीट्यूशंस ने हैंडल नहीं किया तो आई एम सॉरी दैट वी आर गोइंग टू फेस अनदर चैलेंज कि हमारे पास बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब बच्चे होंगे और वो हमें उनके एटीट्यूड से पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है ये किस तरह के स्ट्रेसेस कैरी कर रहा है. अगर हम उस बच्चे को सही तरीके से हैंडलिंग नहीं करेंगे, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट चैलेंज राइट नाउ. When the reopening of school will take place, this is what we are going to focus on. हमने इंडिविजुअल केसेस को एज इंडिविजुअल्स लेना है. वी डोंट हैव टू रश टू द कंक्लूजन्स. हमने उन बच्चों के साथ जो अभी आएंगे उनके साथ बातचीत करनी है, उनके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करनी है ताकि वो जो है वो उनकी कोई भी चीज़ जो है वो उनके लिए एकेडमिक प्रोग्रेस में हिंड्रेंस क्रिएट ना करें. Now let's see the challenges that the students are facing in detail. They are in state of loss and bereavement. That means they are very much concerned कि उनका बहुत time waste हो गया है और they don't know what to do with it. The different experiences, they are experiencing different things at home, like for example domestic violence, abuse or negative attitude. Family conflicts are also increasing and there is no social interaction. There is no way they can get rid of the stresses they are having. And there's a lot of uncertainty whether the schools are going to open or not or what is going to happen next. So these are quite disturbing for the students. Transitions, they're in a state of transition and now we need to understand that along with these challenges, how the teachers need to handle such kind of stresses. They need to keep in mind that
they need to define one size will not fit for all. That means that one strategy cannot be applied to all. Every child is coming up with different mindset, different personality, so a different handling is required. Different kids are in different emotional state, so the strategy needs to be different for every child. Learning might have to wait. The priority is to have a stable emotional state, not to immediately reach academic excellence. It will definitely, the end target is academic excellence, but slowly and gradually they'll move towards that. And don't dismiss concerning behaviors. That means if the teacher is observing that their child is showing a different kind of behavior or having mood swings, so they need to understand there is something bothering the child. At occasions, the children are showing a very they're very lethargic, they're very tired, and this attitude is persistently going on. So the teacher need to pick up that thing, and she needs to identify, उसको देख लें कि अगर बच्चा ऐसा attitude show कर रहा है, definitely the child is facing some sort of serious problem and which needs to be handled. बच्चों के बहुत ज़्यादा weight put on कर लिया है during quarantine, and because of which they at occasions feel very shy, and at occasions their fellow students bully them. So in such a situation, again the teacher needs to intervene. At occasions students are very reactive and they are showing a lot of anger and outburst. So उसको भी हैंडल करने का तरीका होना चाहिए कि टीचर को ऐसे बच्चे को she needs to dig deep into the problem, and she needs to find out the thing which is disturbing the child and how to provide help to the child to overcome such a situation. And if there are occasions the students are getting having very secretive behavior, that is also an indication for a teacher to understand that the child is in difficulty. Any sign of self-harming. There are few students who harm themselves in different ways. So this is what the teacher needs to keep in mind while taking a class, that how she is going to handle such a situation, and now how the practical tools and strategies and activities through which the teacher can provide help to the student. Number one is acknowledged what has happened. The teacher needs to acknowledge what the child has faced. She needs to provide them opportunity to talk, and she should offer individual opportunities to talk. She should keep privacy. बच्चों की बातें हर एक से डिस्कस नहीं करेंगी, ना अपने कोलीग्स के साथ, ना बच्चों के साथ. And this will create confidence between the teacher and the student, and which will help the student to overcome his stresses. The teacher needs to build connections. That means bonding create karegi teacher. Painting and drawing. Teacher at occasions students are very poor in talking, and they don't talk about themselves, but through their work, through their paintings and drawings, the teacher can understand the state of mind the child is having and the problems the child is facing. So this is another very important tool through which you can provide help. You can actually understand the child's attitude and then obviously the strategies to provide help. And the teacher needs to communicate these 3 CII, that is communication, identification, intervention model. I hope all these tools are definitely going to provide some sort of help to the teachers as well as to the parents, to provide help to the students so that they can move towards their academic excellence. Thank you very much.